Students, today's topic is organic reactions. Imagine the topic pilamane reactions of organic chemistry. So first के mind लगेलो organic reactions कोटी कोटी हुए and केतेटा organic reaction है पारे तो कौन भावुछ organic reactions कोटी कोटी हुए all living body रे हुए माने all types of animals with organic reaction हुए all plants with organic reaction हुए dead body रे organic reaction हुए agriculture रे organic reaction हुए so amount of organic reactions but number of organic reactions in chemistry is vast, very vast. So organic chemistry is a vast chapter. इतने टाइप्स रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी जो माने से भीतर डेप्थ को पढ़िबे से माने देखिबे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस अच्छी. In plus 2 science first year we will enter into that vast chapter organic reactions. So in plus 2 science first year syllabus जहाँ किसी अल्प अच्छी सेति के आमे एठी पढ़िबा. एते बड़ भास्ट चैप्टर रो 1% ही प्लस टू साइंस फर्स्ट ईयर सिलेबस रे अछि. सो प्लस टू साइंस फर्स्ट ईयर सिलेबस रे जति के अछि आमे सेति के पढुछु. आउ जदि मेकानिज्म इन डेप्थ एक्स्ट्रा दरकार ताले हमरो जेई और नीट वीडियो रे से सब पाइबो. एटा हमर केवल प्लस टू साइंस सीरीज एथिरे प्लस टू साइंस लेवल रो पाठ पूरा फंडा क्लियर करके पढ़ा जाए और प्लस टू साइंस एग्जाम पे प्रिपेयर करा जाए. So now we enter into organic reactions. What is the fundamental of reactions? You know, in reaction there is reactant and product. For example, think a reaction H2 plus Cl2 provides HCl. In this reaction, these are the reactants and these are the products. Now reaction टा केमिति हुए ना H2 रो H bond टा break हबो, chlorine रो Cl bond टा break हबो, एथरे H free हबो, एथरे Cl free हबो. This H और Cl भितर bond form हबो. Balance करिया पे 2 लिखिबा. So 2 bonds of HCl is formed. So in any chemical reaction all bonds present in reactant side will break and all bonds present in product side will form. Any chemical reaction रे reactant side रे जहाँ सब bonds थिबा break हबो, product side रे जहाँ सब bond देखुचो form हबो. So in chemical reaction the first step is bond breaking or bond fission. This bond breaking is also called as bond fission or bond cleavage. So in first step we will discuss about this bond fission or bond cleavage. Bond fission or bond cleavage is the breaking of a chemical bond to perform a chemical reaction is known as bond fission or bond cleavage. Broadly it is two types, homolytic fission and heterolytic fission. What is homolytic fission? What is heterolytic fission? Look at Cl. Here is the bond pair. Now, if the fission of the bond takes place such that chlorine will get its electron, this chlorine will get its electron, and 2 neutral chlorine atom will released. This is homolytic fission. This covalent bond रे जो bond pair of electron अच्छी से bond pair of electron भितरु this chlorine रो गोटे electron, this chlorine रो गोटे electron fission टा एमिति हवा this chlorine तार electron पाइबा, this chlorine आर electron पाइबा and दुईटा neutral atom form हवा. This is homolytic fission. So we can define this type of bond fission in which
the shared pair of electron is equally distributed is homolytic bond fission. कोभालेंट बॉन्ड रे जो शेयर्ड पेयर टा अछि सेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हबो बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स जो मानक भितरे बॉन्ड हेछि से मानक भितरे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हबो ये गोटे पाइबो से गोटे पाइबो दैट इज होमोलाइटिक फिजन. Okay, the fission in which the bonded pair of electrons is equally set in between the two atoms making bond. Okay, and these neutral atoms obtaining are called free radicals. In homolytic fission, we get neutral atom, they are free radicals symbolized like this. Okay, and generally we can, like, if this is a B bond, here is one electron, homolytic fission, this comes to here, this comes to here, this is the symbol of homolytic fission. So we get a neutral A atom, neutral B atom, these are the free radicals, A and B are free radicals. So in homolytic fission, the bonded pair distributes equally between the bonded atoms and neutral atoms are released, which are called free radicals. Okay. Similarly, now come to heterolytic fission. Clearly, heterolytic fission is the fission such that one atom will get both the electrons and other atom will don't get any electrons. Okay, heterolytic fission is the fission in which the bond pair of electrons are distributed unequally between the bonded atoms. Means one atom will get both the electrons, other will don't get any electron. So how they are symbolized? A bond B. This symbol represents heterolytic fission. Means both the electrons will move to B. So we get A positive species and B negative species. Both electrons B ऊपर move कला, but B रो one electron gain हला, A रो one electron loss हला, so A will become positive, B will become negative. This is heterolytic fission, or we can show this symbol, or we can give this symbol, but this type of symbol is preferable. For homolytic, for heterolytic, this type of symbol is preferable. Similarly, I can show another type of heterolytic. If this symbol means both the electrons come on A atom, so we get A negative species plus B positive species. These are the charged species. Neutral atoms obtained in previous case are called free radicals. Now these are the charged species obtained. Positive charged ions, negative charged ions are obtained. Look at, if carbon contains positive charge, then it is called carbonium ion, and if carbon contains negative charge, then it is called carbanion ion. Carbonium ion, carbanion ion. Remember very importantly, look at an example. CHHCl. This is alkyl halide. If here heterolytic fission takes place, then what is obtained? We can get a positive charge on carbon. Both the electron moves to chlorine, means we can get positive charge on carbon. And what we get? Chlorine minus. This is chloride ion, we know already. Now this is positive charge on carbon, that is carbonium ion. Similarly, if anywhere we get negative charge on carbon, then it is carbanion ion. Okay.
So these are about two types of bond fission: homolytic fission, heterolytic fission. In homolytic fission, free radicals are obtained, neutral, and in heterolytic fission, one positive charged ion and one negative charged ions are obtained. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now let us discuss about attacking reagents. In organic chemistry, the attacking reagents are the main key or main substance, main reagent which start a chemical reaction. Just now कहली, to start a chemical reaction, what is needed? The bond present in the reactant should be breaked. So those reagents which can break this bond are called attacking reagents. For example, गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल अच्छी, if X reagent ता पाखो को आसिले ग्लूकोज मॉलिक्यूल रो किछि बॉन्ड्स ब्रेक हेकरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्शन पे रेडी होची, ताले X को कहबी अटैकिंग रिएजेंट्स. The chemical substance which breaks bonds of the reactant so that it is ready to make the chemical reaction. Those are called attacking reagents. Many types of attacking reagents are there. In plus 2 science first year syllabus, we will discuss two types of attacking reagents: electrophiles and nucleophiles. Very important. Electrophiles, electron loving; nucleophiles, nucleus loving. Remember these two words, then you will be clear in this electrophile and nucleophile, which is very important. Electrophiles means electron loving reagents, means they have a strong tendency to attack a negative charged species. If a attacking reagent is a electrophile, means if it is an electron loving species, then it will attack the negative charged species or electron rich compound or an atom or a site having high electron density. Okay, electrophile माने कौन कहूची? Electron loving reagent. इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव, सो ये इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट माने जोठी भी नेगेटिव चार्ज पाइबो ये ता सहित रिएक्ट करि जिवो, बा न्यूट्रल रे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टिके जदि अधिक हबो, माने इलेक्ट्रॉन जदि टिके क्लोज थिबे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि ताड़ को टिके मूव करि जाइथिबो, एनी मेथड रे एटम ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जदि मोर अछि तबे ताकू भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो. So remember, electrophile, electron loving means the reagent which can attack a negative charged species or which can attack the point having high electron density, also called as site of high electron density. So if कोठी electron density more अच्छी बा negative charge develop हेची, सेठी किया अटैक करिवो, जे अटैक करिवो ताको कहा जाउची electrophile. Now के electrophile हे परिबे? Clearly all positive charge electrophile हे परिबो, because electrophile माने electron loving, माने all positive charge are electron loving. All positive charge such as Cl plus, CH3 plus, H plus behaves as electrophiles. Okay, now Cl plus इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस कहले टिके कंफ्यूजन होतबो, कारण बिगिनिंग रो तमे Cl माइनस कथा सुनि आछछ, Cl प्लस कहले टिके कंफ्यूजन हबो. लुक एट क्लोरीन मॉलिक्यूल रे Cl बॉन्ड Cl रे if heterolytic fission hela, then this chlorine negative charge create habo, this chlorine positive charge create habo na nahi. So
क्लोरीन माइनस टा तमे फर्स्ट ईयर रे सब पढ़िथिलो जानिथिलो एटा बेसी यूज होतला क्लोरीन प्लस भी आसी परिबो केमिति ना एठी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हेले क्लोरीन प्लस हला एठी क्लोरीन माइनस हला क्लोरीन माइनस आयन रो नेम इज क्लोराइड but chlorine plus ion ro name is chloronium. Okay, so in this way we can get the electrophiles and nucleophiles. Here Cl plus is an electrophile because all positive charges are electrophiles. Okay, similarly neutral bhi kichi electrophiles achi. Similarly, some electrophiles are also neutral in nature. In whole semane neutral thibe but electron loving thibe. Kaiki na semanakar central atom incomplete octet thibo. Central atom ro outermost orbit re 8 electron present na thibo. So semane sei electron paiba pai electron loving nature dekhebe. For example, consider BCl3. Consider BCl3. BCl3 रे कौन होची ना boron reacts with 3 chlorine atoms to form BCl3. boron रा outermost orbit रे 3 electron थिला bond हैला पर outermost orbit रे केते electron हैला 6 electron हैला bond हैला पर outermost orbit रे boron रो 6 electron हैला so octet complete हैला कि this is not complete octet, incomplete octet. आउ दीटा इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करि परिबो बोरोन आउ दीटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परिबो so this is electron loving and this is electron deficient compound भी हमें कहि परिबा जेहेतु बोरोन आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे ऑक्टेट रो टिके कम अछि so this is electron deficient compound कहि परिबा so all electron deficient compound have attraction for electrons so they will be electrophilic in nature. Also central atom re jodi vacant d orbital achi it can accommodate electrons so it will be also electrophilic bujh parlo good example douchi SnCl2 this central atom has vacant d orbital so central atom re vacant d orbital अच्छी माने निश्चित भावे सी इलेक्ट्रॉन पाइले से vacant d orbital रे रखि परिबो it can accommodate electrons in the vacant d orbitals so they also behave as electrophiles. और बहुत टाइप रे इलेक्ट्रोफाइल्स अच्छी पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप ए सब अच्छी टिके डिफिकल्ट जिंस प्लस 2 साइंस फर्स्ट ईयर पे इलेक्ट्रोफाइल विषय रे एति के जानिबा यथेष्ट. नाउ न्यूक्लियोफाइल्स again nucleophiles means nucleus loving means positive charge loving means the reagent which attack a positive charge or a point where electron density is less those are called nucleophiles. Nucleus loving means positive loving माने they will attack the positive charge और जोटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थिबो पॉजिटिव चार्ज भली से भी बिहेव करबा दैट पॉइंट को भी न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करि परिबे. All negative charge will behave as nucleophiles because all negative charge will have a tendency to attack on a positive species like OH minus hydroxide ion, Cl minus chloride ion, Cl minus cyanide ions. These all are nucleophiles. Similarly, some neutral compounds also behave as nucleophiles. Those compounds which have lone pair of electrons can behave as nucleophile because lone pair ta jaiki positive charge species को attack करि परिबो बा low electron density point को attack करि परिबो. lone pair of electron jar available अछि से भी nucleophile हे परिबो. for example NH3 or NH2 look at NH3 nitrogen making 3 covalent bond with 3 hydrogen and this is the lone pair of electron. So in this lone pair of electron, this lone pair of electrons is ready to
donate to any positive charge, or a point having less electron density. So this also behaves as a nucleophile. So neutral molecule having lone pair of electrons can also behave as a nucleophile. Also, carbon compounds having double bond or triple bond also behaves as nucleophiles. Okay, any molecule having double bond or triple bond can also behave as nucleophiles. एटा विषय डिटेल टिके इंडिविजुअल चैप्टर रे पढिबो जब पिला माने आमे बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढुचे पुनी इंडिविजुअली गोटे गोटे चैप्टर पढिबा अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइल हैलाइड अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन एसिड अमीन ए सब अलिफेटिक भी पढिबा एरोमेटिक भी पढिबा तो ए जिंस गुडा आउ टिके डेप्थ रे इंडिविजुअल चैप्टर गुडा रे पढिबो एठी हमें जस्ट फंडामेंटल टा कहि जाउछु ओके सो कोन सरला वर्तमान होमोलाइटिक फिजन सरला हेटेरोलाइटिक फिजन सरला इलेक्ट्रोफाइल सरला न्यूक्लियोफाइल सरला नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट नाउ pause the video and write the note. Now I am enter करिबा types of organic reactions. ऑर्गेनिक रिएक्शंस तो बहुत टाइप वेरी फास्ट टाइप केवल प्लस टू साइंस सिलेबस को सेट होला बेला टाइप्स करने गोटे डिस्कशन करिबी इंडिविजुअल चैप्टर गुडा ग्राउंड अधिक अधिक टाइप्स पड़िबो एंट्रेंस प्रिपेयर कले हमर एंट्रेंस वीडियो देखले आउट अधिक अधिक टाइप्स पड़िबो इन फ्यूचर रिसर्च करबो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट अधिक अधिक टाइप मिलिबो पीएचडी कले आउट अधिक अधिक टाइप मिलिबो एटू आरंभ शेष नाही ओके So, types of organic reaction here in plus 2 science first year syllabus we will discuss only 5 types of organic reactions. They are substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, condensation reaction, rearrangement reaction. These 5 types we will discuss: addition, substitution, elimination, condensation, rearrangement. So first we discuss substitution reactions. This is very important. Substitution reactions means an atom or a group will replace another atom or group. मैंने गोटे atom or group जीवो सेठू another atom or group को बाहर करिकी ता जगह रे रहिबो. That is substitution. For example, look at I am thinking about CH4 plus Cl2 तो एठू गोटे हाइड्रोजन आसिक एठू गोटे क्लोरीन आसिक HCl फॉर्म हेबे एठी CH3 थिला ताको गोटे Cl मिसला सो CH3Cl हला सो कोन कहबी मु क्लोरीन सब्स्टिट्यूट्स वन हाइड्रोजन फ्रॉम CH4 सब्स्टिट्यूट माने क्लोरीन गला हाइड्रोजन को रिमूव कला ता जगह नेला हाइड्रोजन को बाहर कर देला दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन So substitution definition कौन कहली replacement of one atom or a group from a molecule by another atom or a group is called substitution reaction. This substitution reaction is 3 types: free radical substitution, electrophilic substitution, nucleophilic substitution. देखो free radical विषय में डिस्कशन कर ले, electrophile विषय में डिस्कशन कर ले, nucleophile विषय में डिस्कशन कर ले, substitution reaction कौन जाने ले? Now ये 3 प्रकार substitution हमें पढ़ेगा. free radical substitute करिबो, electrophile भी substitute करिबो, nucleophile भी substitute करिबो. Very important fundamental concept is this. So mind को पूरा smart करके नजर दियो बोर्ड ऊपर. Now, free radical substitution. First type. Free radical substitution, very simple. Substitution by a free radical. This is an example of substitution of free radical. What happens here? C forms 4 covalent bonds with 4 hydrogen atoms. Then this chlorine undergo homolytic fission to develop 2 chlorine free radicals. One free radical removes here the hydrogen
and obtained CH3Cl. Hydrogen reacts with another free radical, that is HCl. Okay, so substitution by a free radical. Chlorine free radical substitutes hydrogen to form alkyl halide. These type of substitutions are called free radical substitution. The second type is electrophilic substitution. Very simple. Substitution due to an electrophile is electrophilic substitution. It तुम पे नुआ मन देकर सुना. Electrophilic substitution गोटे एग्जांपल दे के हमें बुझबा electrophilic substitution. एग्जांपल टा होची फेनॉल रो ब्रोमीन सहित रिएक्शन कंसीडर करिबा. ओके, सो गोटे रिएक्शन ने मु कहूची ताको टिके मने रखो. रिएक्शन माने जानि छ पिला माने टिके रिमेंबर करियो पड़ियो. तापर रीजन फ्यूजन कथा चिंता करिबा, बट फर्स्ट रिमेंबर करियो पड़ियो. सो एक्सपेरिमेंटली देखा गला फेनॉल. Okay, this is the structure of phenol. Reacts with bromine water, then 2,4,6 tribromophenol is formed. 2,4,6 tribromophenol. OH lagichi. This is 1. This position is 2. 2 rhodobromine lagibo. 4. 4 rhodobromine lagibo. 6 rhodobromine lagibo. This is called 2,4,6 tribromophenol. आउ बाकी जेमती एठी डबल बॉन्ड सब अछि सेमती डबल बॉन्ड सब रहइबो. ओके, ओनली कोन हला ना गोटे गोटे हाइड्रोजन रिप्लेस हला कहा द्वारा ब्रोमीन द्वारा. ब्रोमीन जाई कि सेथरो गोटे हाइड्रोजन रिप्लेस करछि. Okay, this is an example of electrophilic substitution. Ako kai ki electrophilic substitution कहा जाउछि कोन कहा जाउछि? Remember, bromine bond bromine. Here heterolytic fusion will takes place. Heterolytic fusion रे कोन हबो? 1 bromine minus form हबो, 1 bromine plus form हबो. Bromine minus the name is bromide, bromine plus the name is bromonium. Now bromonium ion kon kala 2,4,6 positions ru H plus को remove करिकरी से मानक जगह रे occupy कला. So look at, this is the experimental reaction. Phenol reacts with bromine water, we get 2,4,6 tribromophenol. केमिति हुए रिएक्शन टा बुक गुडा करे कहिछि. ब्रोमीन ब्रोमीन भितर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हबो. सो दिस ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज हबो, दिस ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज हबो. नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमाइड आयन, पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन. सो ब्रोमोनियम आयन 2,4,6 पोजीशन रे H प्लस आयन को रिमूव करिकि से मानक प्लेस रे अछि. So H plus is substituted by Br plus कहबा. Now Br plus ta electrophile na nucleophile? Clearly electrophile. So the electrophile Br plus replace H plus from benzene ring to form 2,4,6 tribromophenols. Okay. Now the question is जो bromonium ion कहीं 2,4,6 पॉइंट रे ही अटैक कला, 3 और 5 पॉइंट रे कहीं अटैक कलानी. 1 रे तो करि परिबनी, OH अछि छाड़ो. 2, 3, 4, 5, 6 पांचटा पॉइंट रु Br प्लस ब्रोमोनियम आयन ओनली 2,4,6 रे ही अटैक करी कि H प्लस को सब्स्टिट्यूट करिछि. 3 और 5 रे अटैक करि पारिनी. This is very important. Our reason जानबा very important. Okay, बुझि परला ना पिला माने पॉइंट टा कोन? तो रिएक्शन तो very simply कहले हेटेरोलाइटिक फ्यूजन है कि ब्रोमाइड आयन ब्रोमोनियम आयन आसिला. देन ब्रोमोनियम आयन 2,4,6 पोजीशन रो H प्लस को सब्स्टिट्यूट कला. सो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म्ड. नाउ क्वेश्चन आसुची Br प्लस ब्रोमोनियम आयन 3 और 5 को कहीं अटैक करि पाउने, ओनली 2,4,6 को कहीं अटैक करि पाउछि.
सो लुक एट से रीजन को जीवा पूर्वर ए पोजिशन जाकर आउ टिके शॉर्टकट ना अच्छी कही दउची ए 2 पोजिशन और 6 पोजिशन both are nearest to the functional group, so these are called ortho position. Both these positions 2 and 6 they are called ortho. Now similarly come to these two positions 3 and 5, they are also equivalent position to the functional group. ये functional group जति दूर अछि, ये भी functional group जति दूर अछि, तनो ए दुटा को गोटिए ना दिया जाइछि मेटा। जबकि ए दुटा पोजिशन फंक्शनल ग्रुप को इक्विवेलेंट ए दुईटा जगह अर्थ कहगला सेमती दिस दुटा पोजिशन भी फंक्शनल ग्रुप टू इक्विवेलेंट दिस दुटा को मेटा कह जाउछि एंड दिस पोजिशन ता जे फंक्शनल ग्रुप टू बहुत दूर रे अछि ताको कह जाउछि पारा। सो हम जो 2 3 4 5 6 कथा कहउतिले से गुडा को सब अर्थ मेटा पारा। सो अर्थ पोजिशन का लिंक करूछि 2 and 6 को, मेटा पोजिशन 3 और 5 को, पारा पोजिशन 4 को। ना हमर क्वेश्चन आसिला जो क्वेश्चन हम डिस्कशंस करूथले BR प्लस वाई अर्थ एंड पारा पोजिशन रे अटैक करे मेटा पोजिशन रे काहे के अटैक करे। Look at phenol ro resonating structures को देखैथिली phenol रो resonating structures गुडा को ऊपर नजर पकाओ। Clearly in resonating structures of phenol we get negative charge on ortho and para positions. Okay, to know the region of this let us see the resonating structures of phenol. The resonating structures of phenol clearly indicate that negative charge is induced at ortho and para positions. Okay, so resonating figure उड़ा नजर पकाओ ortho and para positions रे ही negative charge induce ହେଇଛି, meta position दिटा रे negative charge induce ହେଇନି। Now bromonium ion Br plus टा इलेक्ट्रोफाइल तेणु से कोड अटैक करियो निश्चित भाव जोठी नेगेटिव चार्ज क्रिएट है सेटा अटैक करिवो जेहेतु ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस रे नेगेटिव चार्ज सब क्रिएट होची तेणु Br प्लस टा केवल ऑर्थो पारा पोजिशंस रे अटैक करिवो तेणु हमरो जो ब्रोमोफेनॉल तयारी हला सेटा ऑर्थो पारा ब्रोमोफेनॉल तयारी हबो। ओके, मेटा ब्रोमोफेनॉल केबे भी तयारी हे परिबो नै। ओके, सो डिस्कशन हला व्हाई ब्रोमोनियम ऑर्थो एंड पारा पोजिशन रे अटैक कला मेटा पोजिशन रे अटैक कलानी दैट इज सिंपली ड्यू टू resonating figures negative charges are induced at ortho and para position so the electrophile attacks but negative charge is not induced at meta position so electrophile does not attack the meta position. This region रे हमें कहि परिबा the OH group is inducing the benzene ring so that electrophile can attack ortho and para position, but this OH group benzene ring रे एमिति चेंजेस करे जमिति कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो para position रे अटैक करे तेणु ऑर्गेनिक लैंग्वेज रे कोन कह जाउची the OH group is ortho and para directing in nature. Remember, ortho and para directing in nature. सेमिति मेटा directing in nature अछि माने किछि कंपाउंड ortho and para directing in nature and किछि कंपाउंड मेटा directing in nature माने कोन जे ortho and para रे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करिवो सो दैट इलेक्ट्रोफाइल टा ortho and para को अटैक करि परिवो दैट इज कॉल्ड ortho and para directing and G ortho and para रे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करिवो सो दैट इलेक्ट्रोफाइल टा ortho para को अटैक करि परिबोनी मेटा को अटैक करि पारे those groups are called meta directing group. Normally जो माने प्लस आर इफेक्ट देखांती जस्ट लाइक OH ग्रुप से माने ऑर्थो एंड पारा पोजिशन रे नेगेटिव चार्ज डेवलप करंती सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन सो ऑल प्लस आर ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। सिमिलरली जो माने माइनस आर इफेक्ट देखांती
इलेक्ट्रोफाइल से मेटा पोजिशन अटैक करे सो दे आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर ओके आगु आगु ऑर्थो डायरेक्टिंग पारा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग बहुत थर आसीबो सो जो ग्रुपटा इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पारा पोजिशन रे अटैक करिया पे सुविधा कराए दैट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग एंड जो ग्रुपटा इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन रे अटैक करिया पे चेष्टा करे दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ओके बेंजीन रिंग रे थिबा ग्रुपटा इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पारा पोजिशन रे अटैक करिया पे जदि रास्ता खुलिबो दैट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग बेंजीन रिंग रे थिबा फंक्शनल ग्रुपटा इलेक्ट्रोफाइल को जदि मेटा पोजिशन रे अटैक करिया पे रास्ता खुलिबो दैट इज मेटा डायरेक्टिंग दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आगो सेकेंड ईयर रे एथुरु तमे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विषय जानो ऑर्थो मेटा पारा पोजिशन जानो एंड व्हाई ब्रोमीन प्लस बा ब्रोमोनियम आयन ऑर्थो एंड पारा रे अटैक करछि मेटा रे अटैक करनी माने तार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानि परिबो एगुडा करे सब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हेछि सो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पारा पोजिशन रे अटैक करछि Now pause the video and write the note. 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 Next is nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution means substitution by a nucleophile. Nucleophile is the nucleus loving or positive charge loving. So all negative ions are the nucleophiles. Now we will discuss nucleophilic substitution with help of an example. So look at, consider a alkyl halide Cl. Now here heterolytic fission takes place such that chlorine get both the bond pair of electrons. So this carbon will attain positive charge. So what is coming? This carbon is coming with a positive charge and this chlorine is coming with a negative charge. So this is a positive charge carbon. कही पॉजिटिव चार्ज कार्बन को कौन कहा जाए कार्बोनियम आयन दिस इज कार्बोनियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन ओके नाउ व्हाट हैपेंस then if this alkyl halide reacts with aqueous KOH if this pass with KOH. If this alkyl halide reacts with aqueous KOH, तो KOH dissociates as K plus and OH minus ion. Here OH minus is the nucleophile. OH minus can attack on this carbon atom because this is positive. So what we obtain? OH. So we obtain an alcohol, then K plus Cl minus will combine to get KCl. This is the example of nucleophilic substitution. Alkyl halide reacts with aqueous KOH. Heterolytic fission takes place here to form carbonium ion and chloride ion. K plus reacts with chloride ion to form KCl. OH minus nucleophile reacts with carbonium ion to form alcohol. So OH minus nucleophile replaces Cl minus from alkyl halide. So this is nucleophilic substitution of alkyl halide. एमती अनेक गुड़िए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब आसीबो तमर चैप्टर भितरे एवरी चैप्टर रे किछि ना किछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसी पारे किछि चैप्टर रे बेसी आसी पारे से गुडा को धीरे धीरे पढिबो एमती आगु को बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसीबो सेथिरे धीरे धीरे जानिबो Now pause the video and write the note.
So substitution type of reactions को हमें complete कले free radical substitution, electrophilic substitution, nucleophilic substitution. Then the next type is coming addition reaction. Addition reaction. Addition reaction means what? If two or more molecules unite to a single molecule, then the reaction is called addition. Reactant रे थिबा molecule गुड़ाक unite हेकि गोटे single substance form करेंगे किसी substitute हबनी क्या सहित बाई प्रोडक्ट किसी बाहरी बनी reactant side रे जो माने अछंती सब गुड़ाक united हेकि गोटे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे that is addition reaction or synthesis reaction. A very simple example, C2H2 plus 2 molecules of hydrogen produces C2H6. This is acetylene. Acetylene reacts with hydrogen to produce C2H6, that is what? Ethane. Look at another interesting addition. CH3 single bond CH double bond CH2 plus HBr. Okay, HBr will be H plus Br minus. So clearly this pi bond will break. This pi bond break hele एठी कार्बन रो गोटे बॉन्ड अवेलेबल हबो एठी कार्बन रो गोटे बॉन्ड अवेलेबल हबो CH3 CH दिस पाई बॉन्ड टा ब्रेक हला डबल बॉन्ड टा सिंगल बॉन्ड हला CH2 पाई बॉन्ड टा ब्रेक हबे जो दिस कार्बन रो गोटे बॉन्ड खाली अछि दिस कार्बन रो गोटे बॉन्ड खाली अछि माने के भी आकू अटैच ही परिबे गुडा करे कारण कार्बन रो चारटा बॉन्ड दरकार तो ये पाई बॉन्ड टा थिला एठी चारटा होतला पाई बॉन्ड टा ब्रेक हला माने एठी गोटे के ता सहित अटैच ही परिबे एठी सहित के गोटे ता सहित अटैच ही परिबो नाउ के अटैच बा बी अवेलेबल H plus और Br minus H अवेलेबल सो गोटे H अटैच हबा गोटे ब्रोमीन Br अटैच हबा नाउ H को पुटे एठी H लागिवो ना एठी H लागिवो ना एठी ब्रोमीन लागिवो ना एठी ब्रोमीन लागिवो ओके सेटा केमिति डिसाइड करबा प्रीवियस केस गुडा को कोन थिला CH ट्रिपल बॉन्ड CH थिला सो हाइड्रोजन ऐड करले हाइड्रोजन को मु कोठी भी लगे दी परबी ओके बट इन दिस केस एठी H एठी Br लगेले नेम गुडा अलग हबो एठी Br एठी H लगेले नेम अलग हबो बिकॉज डबल बॉन्ड रो both side रे different group अछि this is unsymmetrical alkane okay double bond रो but triple bond रो both side रे same रहले that is a symmetrical double bond और triple bond रो both side रे different groups रहले that is unsymmetrical. तो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को एडिशन टा किछि प्रॉब्लम नाही को पटे कोन लगो चलगो नो प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल ये जदी HBr सहित रिएक्ट हितांदा एठी H लगो एठी ब्रोमीन लगो नेम जहा आसीबो एठी ब्रोमीन लगो एठी H लगो नेम से आसीबो बट अनसिमेट्रिकल अल्किन हे गला डबल बॉन्ड रो बोथ साइड रो अलग अलग अछि तो सेथिरे H टा एठी लगेबा ब्रोमीन टा एठी लगेबा वाले नेम अलग प्रकार हबो एठी H लगै कि एठी ब्रोमीन लगेले नेम बा कंपाउंड अलग प्रकार हबो सो कोटा करिबा दिस इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल ओके मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टेट दैट positive part of the addendum will be attached to that carbon atom containing more number of hydrogen atoms. Addendum ro positive part ta को carbon atom को लागिवो जो carbon atom रे more number of hydrogen bond attach अछंती
देख हियर एई दुईटा कार्बन गोटे रे पॉजिटिव टे लागिवो गोटे रे नेगेटिव टे लागिवो दिस कार्बन को दुईटा हाइड्रोजन अटैच अछि दिस कार्बन को गोटे हाइड्रोजन अटैच अछि सो मार्कोनिकॉप्स रूल अनुसार H प्लस पॉजिटिव टा एठी लागिवो एंड ब्रोमीन टा एठी लागिवो सो अनसिमेट्रिकल अल्किन किंबा अल्काइन जदि आसिला ऐड कला बेले मार्कोनिकॉप्स रूल उपरे टिके कंसंट्रेट करियो पड़ियो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल करियो पड़ियो remember the Markovnikov's rule is positive part of the addendum will attach to that carbon atom which contains more number of hydrogen atoms. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. The next type of reaction is elimination reaction. From the name of elimination, you can judge what is the nature of this reaction. Means some molecule eliminates, some molecule removed from the main product. Okay. Now, if elimination takes place, then single bond converts to double bond. Okay. Look at one example. So, this is ethyl halide. If ethyl halide pass through KOH, any alkyl halide pass through KOH or any base, then look at interestingly, K will take away this halogen to form KX and OH will take away this hydrogen. Because this halogen टा गला माने this hydrogen टा जीवाकू पड़िबो काहे ना this halogen चली गला माने कार्बन रो चारटा बॉन्ड फिल अप हेनी तीनटा बॉन्ड फिल अप हला सो this hydrogen को बाहर कले ही एई कार्बन रो भी तीनटा बॉन्ड हबो सो दैट एटी डबल बॉन्ड दे देले कार्बन रो चारटा बॉन्ड हबो सो लुक एट K this halogen को नेला माने OH this hydrogen को नबो काहे दिस हाइड्रोजन को नबो बुझो छ देखो OH दिस हाइड्रोजन को लेके वाटर फॉर्म कला लुक एट दिस हाइड्रोजन चली गला मींस कार्बन रो तीनटा बॉन्ड एठी हिची दिस हाइड्रोजन एटू बाहर कले ही कार्बन रो तीनटा बॉन्ड हबो ना कार्बन गुडा कर चारटा लेके बॉन्ड दरकार सो दिस हाइड्रोजन को एटू बाहर करी की एठी जदी डबल बॉन्ड दे देबा ताहले कोन देखा जीवो C H double bond C H एमती हम सिचुएसन एठी गोटे हाइड्रोजन बाहरला एठी गोटे हाइड्रोजन बाहरला तेणु एठी गोटे डबल बॉन्ड दे देले कार्बन रो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गला टेट्रा कोवैलेंस कंप्लीट हो गला एठी जो बॉन्ड टा लागि थिला दिस कार्बन को लागि थिला एठी जो बॉन्ड टा लागि थिला दिस कार्बन लागि थिला सो दिस मॉलिक्यूल टा चली गला दिस मॉलिक्यूल टा चली गला माने आकु गोटे बॉन्ड दरकार आकु गोटे बॉन्ड दरकार सो एठी डबल बॉन्ड दे देले दुई जण जाको बॉन्ड मिलला एंड कार्बन रो टेट्रा कोवैलेंस फिल अप हला So this is an elimination reaction. So in elimination reaction, two atoms or group of atoms are removed from adjacent carbon atoms so that extra bond can be formed in between them. Double or triple bond can be formed in between them. Okay, these are the elimination reactions. दीटा एडजेसेंट कार्बन रो एटम बा ग्रुप गुडा बाहर सो दैट एमान भीतर गोटे एक्स्ट्रा बॉन्ड लगेदेले दी जन जाकर बॉन्ड फिल अप ही पाउथबो ओके सिमिलरली come to discuss another okay elimination reaction. This is alcohol, ethyl alcohol or ethanol. If this ethyl alcohol passes through dehydrating agent H2SO4 माने जे कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करिवो तेणु डिहाइड्रेटिंग एजेंट सो अल्कोहल रो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हबो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हेले AOH आउ AH मिसिकरी रिमूव हबो वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज़ ए गुडा को रिमूव हेले एठी डबल बॉन्ड फॉर्म होछ सो C bond H
bond H এটা রিমুভ হলা এটা রিমুভ হলা সো এটা ডবল বন্ড হলা C bond H bond H so again जो atoms or group of atoms remove होची तेरा adjacent carbon atoms remove होची so that सेवानो भितर extra bond हे परिबो so in both cases alkenes are formed ethenes are formed these are the type of elimination reactions okay Now pause the video and write the note. then the next type is coming arrangement reactions arrangement reactions माने एपटे गोटे कंपाउंड थिबो एपटे गोटे कंपाउंड थिबो किछि ऐड हे नथिबो कि किछि बाहर नथिबो सिंपल रीअरेंज हेथिबे फॉर एग्जांपल लुक एट वी नो NH4CNO रीअरेंज हे कि NH2CO NH2 फॉर्म करि पारुछि this is ammonium cyanate this is urea this is ammonium cyanate and this is urea so look at nothing added nothing removed only rearranged atoms rearranged to form a new compound urea these are called rearrangement reactions similarly there is condensation reaction now our discussion ro last type ka asigale condensation reaction is also like a addition reaction but simple compound guda ka add hele addition reaction ra ase kichi complex compound add hele condensation reaction ase what is condensation reaction particularly two molecules of same type or different type will get united to a single complex product is condensation reactions. For example, two aldehyde can united to form a complex product that is condensation reaction. Take two aldehydes CH3 CHO plus CH3 CHO so टिके सजाई के लिखिबा CH double bond O single bond CH3 plus आपको भी टिके सजाइबा C double bond O single bond H CH3 okay CH3 CHO CH3 CHO सेदिरा यूनाइटेड हेबे पे टिके सजेई की यूनाइटेड रे कोन होची इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन KOH NaOH सो कोन होची एथिरु गोटे हाइड्रोजन दिस ऑक्सीजन पाखु शिफ्ट हे जाउची सो एथिरु हाइड्रोजन दिस ऑक्सीजन पाखु शिफ्ट हेले बाकी सब जमी सेमति रहला HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एथरो जति गोटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाखु शिफ्ट हला सो एठी CH2 हला CH2 माने एठी गोटे बॉन्ड खाली रहला CH3 थिला गोटे हाइड्रोजन दिस O पाखु शिफ्ट हे जो माने एठी गोटे बॉन्ड खाली रहला सिमिलरली दिस कंपाउंड रे कोन हबो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 ए पार्ट गुडा जेमति अछि सेमति रहला कारण एठो हाइड्रोजन टा जाई का लागला O को लागला एठो हाइड्रोजन टा जाई O को लागिबो सो ए पार्ट गुडा जेमति रहि छै सेमति रहला नाउ एठो हाइड्रोजन जाई जदी O को लागला एटा OH हे गला OH जदी हे गला एठी गोटे सिंगल बॉन्ड लागिबो सो एपटे कार्बन रो आ गोटे बॉन्ड खाली रहला so look at H टा O ऊपर को चली जिबा जोगु this carbon रो गोटे बॉन्ड खाली अछि this carbon रो गोटे बॉन्ड खाली अछि now ए दुईटा गोटे सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देले it becomes a saturated compound so what we are getting HC double bond O single bond CH2 single bond C OH single bond H single bond CH3 okay so two aldehydes are united to form a complex product these are condensation reaction aldehyde ketone pathare eguda very importantly अछि सेठी सब डिटेल पढिबो okay तो पिला माने
organic reactions or basic concepts of organic reaction +2 साइंस लेवल रे एतिकी आउरी बहुत बहुत अच्छी आमर जेई नीट वीडियो रे किछि पाइबो और जो माने रिसर्च करिवो केमिस्ट्री पढिबो से माने भी बहुत पाइबो फर्स्ट ईयर रे बेसिक concepts of organic reactions एतिकी Now pause the video and write the note.